जिला महेंद्रगढ़, जहां भगत जी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय राव प्रहलाद सिंह जी का नाम आज पूरे हरियाणा राज्य में शिक्षा का एक विशाल आधार स्तंभ बन चुका है। Rao Prahlad Singh Education Society has established new dimension in the arena of education by establishing a chain of educational institutions. समाज के शिक्षित युवाओं को देखकर अक्सर अपने मित्रों और शिक्षाविदों से इस विषय पर विचार विमर्श होता है और इसी संदर्भ में आरपीएस परिवार के सहयोग से आगे बढ़ते हुए सन 2008 में अरावली की हरी भरी वादियों से घिरी सुंदरता के बीच गांव बनाना महेंद्रगढ़ हरियाणा में आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में सिविल इंजीनियरिंग अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारा आज का जीवन स्तर वाकई इस पर निर्भर है। We are imparting the basic knowledge on building construction, structure design, surveying and drawing. निर्माण में तकनीकी रूप से आगे बढ़ना किसी भी देश की सबसे पहली जरूरत है। सिविल इंजीनियर्स इसी विषय पर अपना खास रोल अदा करते हैं। Well-educated IT professionals are in great demand both in India and overseas. Today, communication skills plays a vital role in professional careers. A diverse range of careers is available to graduates from RPS courses in computer science and information technology. Here at RPS, the communication skills of the students are groomed in the language lab through various modules. Electronic engineering continues to be a beyond industry. The department offers BTech degree in the discipline of Electronics and Communication Engineering. Department offers quality education through use of modern teaching aids technique and to undertake research in engineering and technology. Students in ECE department are encouraged to undergo supervised practical training in different industries so as to get hand-on experience and become employable technocrats. In the modern world, mechanical engineering is central to many activities leading to industrial and business growth. Mechanical engineering is concerned with all types of machinery in industries. Emphasis is on communication skill, creativity, leadership and innovation to make our students capable of undertaking responsibility. The Department of Applied Sciences and Humanities is continuing with the mission of imparting teaching and promoting implementation of practical aspects of applied sciences and humanities to build a solid foundation. Here at RPS, we are provided with the basic tools of analysis and knowledge of principles. The mission of the MBA, BBA and BCA program at RPS is to provide an applied business education. The Department of Management Studies aims at providing academically rigorous and professionally relevant teaching to enable the students to accept the challenges.
The institute has a well-established training and placement cell. The cell continuously explores different areas of opportunities for placements. One of the most important parts of T&P cell is training. The RPS group of institutions has highly qualified, dedicated faculty, supporting staff. RPS has made my dreams to be a true IT professional. We RPSians do believe in smart work with perfection. RPS now is a brand name in education. In our institutions, we convert the young minds into successful professionals through practical implementations. And only because of that reason, more than 10,000 students from all over India are getting education over here. A well-stocked library in the heart of college campus. The state-of-the-art Central Library is housed in a 3-story building. The transport facility for movement of students from nearby cities and villages is available. The college has separate hostels for boys and girls, well equipped with Wi-Fi connectivity and all the modern facilities. It is a home away from home. हमारा प्रयास है कि हम स्टूडेंट्स को जो देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ रहे हैं एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाने पर जोर दें जो समाज व देश के उत्थान में भागीदार बने। As per the saying, seeing is believing, I invite all the prospective scholars and parents to visit the RPS campus and see excellent infrastructure and training facilities, academic ambience which helps in better placements of our graduates. Encouraged with tremendous growth of all our institutions, we have planned for establishment of a university and a medical college in future. अलग अलग मौकों पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान आरपीएस का रंग अलग ही देखने को बनता है। The students are encouraged to participate in various sports. They have made us proud with their achievements. आजा आजा ख्वाबों को हकीकत में बदले, आरपीएस की राहों पे बढ़ते चले। आजा आजा ख्वाबों को हकीकत में बदले, आरपीएस की राहों पे बढ़ते चले। आज से ये कल की सफल शुरुआत है, आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने साथ है। मन में ललक है, इरादों में चमक है, जिंदगी हो कामयाब सच्चा विश्वास है। हे आजा आजा ख्वाबों को हकीकत में बदले, आरपीएस की राहों पे बढ़ते चले। हजारों विद्यार्थियों के साथ उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में आरपीएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षित और मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित समाज के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।